Ladies and gentlemen, in this iFactioners learning video tutorial, we will learn what do we mean by Bayroonay mulk in Urdu or Videsh में in Hindi language. We will learn their meaning in English and then we will make 3 English sentences and we will translate them in Urdu and Hindi. Let's start our tutorial. So, बैरून मुल्क in Urdu or विदेश में in Hindi means abroad. Now let's make 3 sentences and translate them in Urdu and Hindi. First sentence is my brother lives abroad. Now if we want to translate it in Urdu and Hindi, then my is मेरा, brother is भाई, lives means रहता है and abroad is बैरून मुल्क और विदेश में. Now let's translate this sentence. So we will translate it as मेरा भाई विदेश में if we want to say it in Hindi, or बैरून मुल्क if we want to say it in Urdu. मेरा भाई विदेश में, मेरा भाई बैरून मुल्क रहता है. So we translate my brother lives abroad as मेरा भाई विदेश में रहता है, मेरा भाई बैरून मुल्क रहता है. Now there is another sentence, I'm going abroad. How do we translate it in Hindi and Urdu? I'm going abroad. मैं am means रहा हूँ, going जा रहा, जाना, and abroad is बैरून मुल्क और विदेश. So I am going abroad can be translated as मैं विदेश में, और बैरून मुल्क in Urdu जा रहा हूँ. And if I'm a female, then I will say मैं बैरून मुल्क जा रही हूँ, मैं विदेश में जा रही हूँ. Our last sentence is why do you want to go abroad? Why is क्यों, you तुम, want चाहते हो for male, चाहती हो for female, to go जाना, abroad is विदेश में और बैरून मुल्क. Now let's translate it in Hindi and Urdu. So we will say तुम विदेश में और बैरून मुल्क क्यों जाना चाहते हो for male and चाहती हो for female. So if you are asking from male, then we will ask तुम विदेश में क्यों जाना चाहते हो, and if we are asking from female, then we will ask तुम बैरून मुल्क क्यों जाना चाहती हो. And if you want to show some respect, then you can ask आप बैरून मुल्क क्यों जाना चाहते हैं, आप विदेश में क्यों जाना चाहते हैं, और for female आप विदेश में क्यों जाना चाहती हैं, आप बैरून मुल्क क्यों जाना चाहती हैं. And the very informal version of this English sentence, why do you want to go abroad, is तू बैरून मुल्क क्यों जाना चाहता है और तू विदेश में क्यों जाना चाहती है. Ladies and gentlemen, I hope that now you understand the meaning of बैरून मुल्क और विदेश में in Hindi and Urdu. Now please make a sentence in Roman Hindi or Roman Urdu using the word बैरून मुल्क और विदेश में and paste it in the comment section below. I will check it out and tell you if it's right or wrong. Thank you very much for joining me. I will see you
next time. Until then, take care, keep learning, keep enjoying. Good day. Like, share, subscribe. I Factner.